Hello students, hope all you are doing good. Today again we have a video for MS Excel which will help us to learn three formulas today. Basically one we all know, but again we'll repeat that. Some if and some ifs. Basically again जो भी फॉर्मूलाज मैं सिखाता हूँ बताता हूँ इन एवरी वीडियो आई डू रिक्वेस्ट कि जो भी हम लोग करते हैं प्लीज साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस छूटी तो ये आपको याद नहीं रहेगा। ये कोई भी एक्सेल है, दिस इज अ स्किल, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आप मगअप करके इसको कर आगे बढ़ सको। यू नीड टू प्रैक्टिस इट देन ओनली इट विल हेल्प यू, राइट? So now moving ahead to the MS Excel series third part, next part, that will be for some if and some ifs. राइट, सो सम का जैसे मीनिंग है, सम स्टैंड बेसिक कि आपने इसमें फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम एंड देन यू वांट टू से प्राइस का मुझे टोटल करना है कि टोटल प्राइस कितना है। दैट्स यू एंटर एंड यू गेट द सेम फॉर्मूला। सो अब इसको रेंज को फ्रीज कर दो, यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट तक मार दो। फ्रीजिंग का ऑप्शन कैसे करना है? फ्रीजिंग में अगर आपने मान लीजिए स्पेसिफिक रेंज फ्रीज करनी है तो इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फंक्शन की F4 दबा दीजिए, ओपन। किसी के लैपटॉप में अगर FN की भी है, कंट्रोल ऑल के साथ बॉटम ऑफ द उसमें कीबोर्ड में, there you can use FN F4. In some laptops FN F4 works, otherwise in some many of the laptops or desktop F4 works. So इसको या तो आप ड्रैग डाउन कर दीजिए, like pressing double click here, फॉर्मूला सर ड्रैग डाउन हो जाएगा। द सेम आंसर, दिस इज ओनली सम। अब जहाँ पे भी कंडीशन आती है कि आपके पास फॉर्मूले हमारे पास आता है इफ लग जाता है साथ में, सो इफ आस्क फॉर अ कंडीशन, दैट्स द कंडीशनल फॉर्मूला। इट्स नॉट अ फॉर्मूला ओनली फॉर सम, इट इज अ कंडीशनल फॉर्मूला, राइट? सो सम के साथ इफ जुड़ गया, जहाँ की मैं एक कंडीशन दे सकता हूँ इफ की, जहाँ इफ जुड़ जाता है, इफ का मतलब है वी कैन यूज मल्टीपल कंडीशन, राइट? अब मेरे को मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास जो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास टोटल प्राइस कितना आता है कंट्री वाइज, राइट? सो व्हाट आई डू इज इक्वल टू सम इफ, राइट? आई ओपन द ब्रैकेट, फॉर्मूला आस्क मी व्हाट इज द रेंज दैट यू वांट टू गिव। नाउ रेंज जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया कि या तो आप स्पेसिफिक रेंज ले लीजिए दिस मच एंड यू कैन फ्रीज इट लाइक दिस, pressing F4, selecting the whole range. This is one. If you don't want to go with this and आप चाहते हो कि बाबा मेरे को ऐसा ये रीजिंग का ऑप्शन ना सिलेक्ट करना पड़े, बेटर वे इज टू सिलेक्ट द होल कॉलम, उससे आपका ये रेंज फ्रीजिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, कॉमा। देन इट आस्क्स मी टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के बेस पे यू वांट टू फिक्स अप दिस फॉर्मूला। सो आई से कंट्री के रिस्पेक्टिव नेम पे, दैट इज माय क्राइटेरिया, एंड देन आई प्रेस कॉमा अगेन। It asks me which sum range you prefer to get the answer. So this is my column E. I want to get an answer. So AA, where I get the base of the range, and then A2 is my criteria, and EE is my sum range. Bracket close, enter. Right? Copy and paste the whole formula again. And इसमें भी आप वो कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे instead of copy paste, you can जस्ट डबल क्लिक है तो सारा फॉर्मूला जहाँ तक आपका टेक्स्ट पेस्टेड है वहाँ पे फॉर्मूला को लिखिए, राइट? इसको करेंसी में जो डालना हो, गो टू होम, देन सिलेक्ट से पाउंड, यूरो, दैट्स द वन यू वांट टू सिलेक्ट, राइट? दिस इज वन सम, सेकंड वाज सम इफ, and now third is sum ifs, right? So now in third formula, sum ifs, I want to know that in a specific country, in a specific resort, what is the price, right? I don't want to just go by country. If I want to go say in Australia and I want to go Greater Barrier Reef, then what is the price I'm gonna pay? I should be paying, right? So इसमें criteria मेरा double हो जाएगा. So let's see how is equal to sum ifs, bracket open. नाउ इसमें सम रेंज पहले लेता है, सम इफ में सम रेंज बाद में लेता है। सो इसमें पहले वी नीड टू गिव कि व्हाट इज सम रेंज वी वांट टू सिलेक्ट। दिस इज द सम रेंज कॉलम ई, कॉमा, व्हाट इज द क्राइटेरिया रेंज 1, दैट वाज कंट्री, क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया, बट क्राइटेरिया इज
country का नाम. Then comma, it says what is the criteria range 2. You can go for multiple, as many you want. Criteria range 2 is my resort name, and comma, criteria 2 is my specific resort name. Bracket close, enter. So if you see 750 total was 1500. That's my answer for Greater Barrier Reef. I drag down the formula by double clicking the box on the right, bottom right. It gives me the answer for all the respective country and the resort name. Currency, select, go to this option in the home ribbon and select the English UK. Right? So this is a small video which we were trying to entertain you forward, some ifs, some and some if. That's it for my side. Thank you for this video. Keep watching, keep subscribing, and keep liking the channel, The Bull's Ride. Thank you so much. Have a good day, good evening. God bless. Thank you.